Today's video is related to MCOM students. For the subject is statistical analysis and the topic is association of attributes. Association of attributes. According to this topic, two types of facts and two types of data are available. Two types of facts. First fact is statistical of variables and the second fact is statics of attributes. अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो statics of variables होता है और जो स्टैटिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, इसमें कौन से डाटा को हम लोग शामिल करते हैं। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिसका अंकों में मापन किया जा सकता है। इट इज मेजर्ड इन मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी एंड सम फैक्ट्स आर नॉट मेजरमेंट विथ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी। अगर उनका अंकों में मापन किया जा सकता है तो उसको फर्स्ट फैक्ट दैट मींस स्टैटिक्स ऑफ वेरिएबल बोलेंगे और द सेकेंड जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग स्टैटिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। दिस इज द फैक्ट। स्टैटिक्स ऑफ वेरिएबल्स and statics of attributes. Now some examples, just like income, expenditure, height, weight, age, all are calculated in mathematical terms. Then it is called statics of variables. But some examples, just like honesty, employment, unemployment, literacy, illiteracy, it is not measured in data form. Then this is the example for statics of attributes. Now, in statistical analysis, central tendency, mean, mode, median. Now the next one, dispersion, skewness, correlation, all are related to statics of variables. Because all the data is calculated in mathematical terms. But this type of examples is not calculated in mathematical terms, that is called stats of attributes. Now the next topic, measurement of attributes. Measurement of attributes. Measurement of attributes in two forms. First, presence. Second, absence. Now the presence is denoted by capital letters of alphabets. Just like an example, A and absence, that is just opposite, is deposited in small letters of alphabets. It is denoted by alpha and beta. Next, after measurement of attributes, combination of attributes. This explained with example.
Suppose that capital A is denoted by literacy and B are equals to employment. Now absence A say alpha illiteracy and beta unemployment. Four kinds of items are there. First, A into B. What do you mean by A into B? Literacy and employment. अगर वो पढ़ा लिखा होता है तो उसको नौकरी मिलती है. Second, A into beta. Literacy with unemployment. पढ़े लिखे होने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती. नेक्स्ट वन, बी इंटू अल्फा. इलिटरेसी एम्प्लॉयमेंट. पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद उसको जॉब मिल जाती है. एंड द लास्ट वन, अल्फा इंटू बीटा. लिटरेसी अनएम्प्लॉयमेंट. जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको नौकरी आसानी से नहीं मिलती. एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इज अकॉर्डिंग टू 9 वैल्यू टेबल. It is A and B, it is alpha and it is beta. And it is called N. And therefore number of units as per stats. But as per association of attributes, it is also known as universe. Now the first box, A into B, according to this table, literacy and employment. Same as it is. B into alpha, A into beta and alpha into beta. This is the sum of B, this is the sum of beta, this is the sum of A, this is the sum of alpha. And also B plus beta are equals to N, and it is also A plus alpha are equals to N. Now the next is nature of attributes. The nature of attributes is divided into 3 parts. The first part is independence, second part is positive, and the third part is negative. Now the question is, what do you mean by independence? What do you mean by positive? What do you mean by negative? इसको जानने के लिए हमको फिर से वही 2 प्रकार के गुणों का आपस में तालमेल देखना होगा. 2 प्रकार के गुण का मतलब होता है प्रेजेंस और एब्सेंस. यदि प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों साथ में नहीं होते हैं तो सबको मान लीजिए कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का एग्जाम्पल है. अब इंडिपेंडेंस के लिए आपकी थ्योरी क्या होती है? Independence of attributes, 2 kinds of theories. Now the first, presence and absence, both the association are not together. This is the first. Now the second one, actual frequency are equals to expected frequency. Now the example,
A into B are equals to, are equals to A into B divided by N. Now the second, positive of attributes. Positive of attributes में both the attributes, that means presence and absence, अगर साथ में होते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कहलाता है। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के लिए थ्योरी क्या होती है? तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। नाउ द एग्जांपल, A into B is greater than A into B upon N. Now the third one, negative association. Say presence or absence, अगर दोनों इंडिविजुअली अगर मेंशन होते हैं, चाहे उपस्थित या अनुपस्थित, इंडिविजुअली मेंशन होते हैं तो वो नेगेटिव एसोसिएशन होता है। और नेगेटिव एसोसिएशन की जो थ्योरी होती है वो होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एंड द एग्जांपल इज AB within bracket is less than A into B upon N. Now again method of determining of attributes. Three methods are there. First, comparison of actual and expected frequency. The second, comparison of properties, and the third, use coefficient of association. Now the first, comparison of frequencies. Also I explained for independence of attributes, positive attributes and negative attributes. Now the next, comparison of property. Comparison of property. Now the same example. Comparison of property. A into B upon A are equals to alpha into B divided by alpha. This is for independence. Same as it is, A into B upon A is greater than alpha B upon alpha, that is called positive. And the third one, A into B upon A is less than alpha into B upon alpha, that is called negative. And the third theory, use of association. Third method of determining of attributes, use of association. First two methods में हम सिर्फ गुणों के बीच में साहचर्य है कि नहीं, सिर्फ इसी का पता चलता है. First two methods, that means first method is comparison
between expected or actual frequency, और सेकंड कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज। ये दोनों में सिर्फ गुणों के बीच में सहचार्य है या नहीं, सिर्फ इसका पता चलता है, मगर उसकी मात्रा कितनी मात्रा निश्चित है इसका पता नहीं चलता। इसके लिए यूल्स ने अपना एक यूल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला ड्राइव किया। दिस वन इज अकॉर्डिंग टू 9 value table। AB into alpha beta minus A beta into B alpha divided by AB into alpha beta plus A beta into B alpha. It is also denoted by QAB. In this formula, the value of QAB are equals to 0, then it is called independent. QAB are equals to +1, then it is called positive of association. QAB are equals to -1, this is called negative of association. This is the first part of association of attributes. ये सिर्फ थ्योरी मैंने आपको बताया कि जिसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं विथ एग्जाम्पल some questions are solved in board according to theory. Thank you.